Good morning, students. How are you? Today we will discuss the same topic, that is SQL, which is we have discussed yesterday, structure query language. Then we have continued to the new subtopic, that is called data types. We have already discussed data types in Python. So every language and every database have own data types in which we have to store the data. So in SQL there will be a limited number of data types. First one is numeric data type. As the name suggests, numeric means integer or numbers, the data type which is store the numbers. So there will be a int or integer. We will write both the form. up to 11 digit नंबर विदाउट डेसिमल मीन्स हम एक 11 डिजिट का नंबर, बट इसमें ये एक्चुअली ये 9 डिजिट तक ही स्टोर करता है. 2 डिजिट्स को ये अपने इंटरनल प्रोसेसिंग के लिए रिजर्व कर लेता है. ठीक है. देन स्मॉल इंट अप टू 5 डिजिट नंबर्स अगर हमको विदाउट डेसिमल स्टोर करना है तो हम स्मॉल इंट ले सकते हैं. फ्लोट लेगा, और फ्लोट डेसिमल और न्यूमेरिक, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ. हम इट इज़ डिपेंड अपॉन द विच वर्जन ऑफ एसक्यूएल वी हैव यूज्ड. सम यूज फ्लोट, डेसिमल, नंबर, और सम यूज 2 or 3 both. Now working of all these are same. Store real numbers, they have stored real numbers up to m digits length including with d decimal place, means maximum length or decimal part. If we say float 10,2, it means it has 8 digits before decimal and 2 digits after decimal. This means ये आपकी 2 डिजिट हैं आफ्टर डेसिमल, और ये आपकी 1 2 3 4 5 6 7 है. तो यहाँ पर हम 8 अप टू 8 कर सकते हैं. मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8.81. This is that length, total length is 10 and decimal part is 2. This is how to store decimals or numeric number. Now some date and time function also there. Date, we can store date in YY, MM, DD format, और ये always in quotes. Same time will be stored HH, MM और SS format. ठीक है. Now the strings, so there is a first one is numeric, second one is date and time, and third one is string function, string data type. There will be 2 types of char and varchar, that is variable length char or fixed length char. A fixed length string up to 255 character, default is 1. ठीक है. by default ये जब आप char लिखेंगे तो खाली char लिखेंगे तो it is click only 1. varchar size, a variable length string up to 255 characters. दोनों ही 255 characters को store करते हैं. तो what is the difference between them? तो difference is that if you have to write char, means आपने लिखा a char और ब्रैकेट में दिया 20 and then a varchar 20. when we have to store something, a is equal to ram and a is equal to, यहाँ b लेते हैं, b is equal to ram. तो what is the difference? in fixed length string, a will be fixed up to 20 characters. The length of a is fixed to 20 characters and we have to use only 3 characters. Then 17 characters are fixed and nobody can use these 17 characters. Means they have, आपका ये क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गए और ये फिक्स हो गए हैं, मीन्स यूजलेस है. nobody can use these 17 characters. but in the case of varchar अगर हम देखें तो we have to use only 3 characters, then 17 characters are released and free. हम इसको बोलते हैं freed, ये freed हो जाते हैं and other process can use these 17 characters in your memory. It means variable length is more efficient. means अगर you have a storage of RAM, it means you have to, एक सिंगल बाइट अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यू हैव टू यूज़ varchar. मीन्स इसमें आपको जितना आपने स्टोर किया है कितने कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग, वही उतना ही कैरेक्टर्स को ये एक्सेप्ट करके अदर कैरेक्टर्स को रिलीज़ कर देता है फॉर अदर प्रोसेसिंग के लिए. दैट्स वाई
varchar is more efficient than char. Char, varchar, date and time value should be enclosed with single quote or double quotes in MySQL. Means date जितने भी date function और string functions हैं या string data types हैं, all are using single quotes or double quotes. Without single quotes you cannot store in database. There will be some commands, database commands in MySQLs. So you have to use some commands. In your syllabus there will be a remove this create command, alter command, but without creating command the other command cannot be used, because आपको you have to create your database and then you have to create your table and put the values in table, then you have to put the other queries, or we have some by default database or table in, and then we have to use the other queries. So if we do not we not have any database and table, then we have to create them. So we have to create these tables and these commands tomorrow, and we have I explain with the practicals. तो मैं इसके लिए प्रैक्टिकल बना के आपको दूंगा डायरेक्ट. दिस हम ये सारी कमांड प्रैक्टिकली करके देखेंगे. मैं उसकी एक वीडियो बना के दूंगा. तो फटाफट मैं आप सबको ये जितनी वीडियो जितनी हैं 2 और 3 सेशंस में हम ये सारी वीडियो सारी कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है. अपने प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट मेकिंग बना लीजिएगा. क्वेश्चन आंसर कोई प्रॉब्लम हो तो आप यू कैन कॉल मी. थैंक यू.